So today we will be discussing a new module now, and the topic is vertical stresses, and also we will be discussing later on, that is the shear strength. Then in the fifth module we will be moving on to the different aspects which are related to the shear strength. So let us begin with vertical stresses first here. So see here the topics which you have to cover in this module number 4, that is the shear stress distribution in the soil first of all, and the second is the shear strength. So what we will be studying in shear distribution, that is the stress distribution here, that is elastic constant of the soil and the determination, Bosnius equation for vertical stress, the Westergaard equation also. Then we will move on to stress distribution under the loaded areas. Then we will be also understanding how the load is getting distributed, then how this load is being transferred and what is the effect on different points there. So there the pressure bulbs concept and contact pressure will be coming into picture. Then if you talk about the second part which we will be studying here, that is the shear strength, where we will be studying we will be taking the use of the help of Mohr circle, and then we will move on to the Mohr Coulomb failure criteria, then the modified value of these things, modified formulas there. Then we move on to the shear strength parameters and the determination, which are cohesion and the internal friction angle. So C and phi there we will be taking. Then how the shear strength is getting measured, we will be seeing into those aspects also, that is the direct and triaxial shear test or unconfined shear test. We will also be getting into the vane shear test there. Then further we will move on to the pressure which is exerted by the pores there, and then Skempton's pore pressure coefficients, which are highly applicable when we are talking about the field conditions. Then the last topic for this module will be the soil liquefaction. So these are the two things, these are two major topics that we will be covering in this module number 4. So let us first begin with the vertical stress below the applied loads. Now understand first of all that we have already studied some part of it, how in the seepage part we have studied that how the effective stress concept is being applied there, alright. The total stress was there, then the pore water pressure was there, and then we moved on to the effective stress concept which was given by Terzaghi. Now understand, we have to now understand what are these vertical loads and how their effect will be on the soil. So first of all we will be studying the why is the need there. So in case of a foundation design, vertical stresses are transmitted to the soil which lead to vertical deformation in the soil, and this vertical deformation you have already studied in what, in the consolidation part, where you already saw that there is some volume change, and with that volume change you could have observed some change in height, that was delta H. So these vertical deformations cause foundation settlement there, and this settlement should not exceed a tolerable value, because if the settlement exceeds some set value, then what happens, the structure might collapse or may tend to collapse. So these settlements should be within a permissible limit there. So a knowledge of distribution of stress, okay. So we are talking about the distribution. Let us say some stress is being applied, some load is being applied, and due to this some strain is being observed. When the strain is getting observed, that is because of what, because of the stresses, okay. Let us say some strain is observed, that is because of some stresses that are induced. So and how, now understand this stress which is getting generated, how this will affect the soil or how this is getting varied at different positions in the soil, that is very much required, that is a prerequisite for a foundation design. Now let us see one thing. Let us say if this is the ground level, okay, let us say this is the ground level and this is the load applied here, alright. So this is the load, let us say P load here, and let us say we are talking about at this depth here, at this depth here, let us say this is a parallel line here and this is at a depth, constant depth Z here. Now understand, let us take a point here at this point. Now you can basically, this is just a common sense here, you can understand that like this load is there, alright, this load is here, alright. So just इसके नीचे जैसे लोड लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव दिखेगा, बट जैसे ही हम इसके दूर जाते जाएंगे, जैसे लेट्स मूव एट इन दिस पॉइंट और जस्ट मूव हेयर, सो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पे और इम्पैक्ट कम हो चुका होगा. लेट्स से अगर मैं इस लोड के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से थोड़ा और दूर चला जाऊँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बात करूँ, ओके, यहाँ पे बात करूँगा तो डेप्थ तो देखिए यहाँ पे तब भी कंपैरेटिवली लेस है ना, जहाँ पे लोड लग रहा है उसके पास में है, बट स्टिल ये लोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ जो आपका लग रहा है लोड, इससे जो है काफ़ी दूर पड़ रहा है,
जब इससे काफ़ी दूर पड़ेगा तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे कम हो चुका होगा. बट लेट्स से इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ओनली, दिस पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा होगा, उस लोड का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगा. सो दिस इज द मेजर कंसेप्ट हेयर that is due to the point load. Now let's move on. There are some elastic theories which are given, so we will move on to those theories there. So theory of elasticity has been suggested here to estimate the stresses due to the applied loads. So we have studied that point here in the last class also, in the previous seepage class also. Now understand, if this is the load here P, so in the very first class of seepage and all we have studied that let's say this is the soil mass. So this will be exerting some force at this point, let's say let this point A here, at this point say A. So this soil's effect can be said to as what, let's say the unit weight is gamma and let's say the depth is Z. So this at this point the stresses which are there due to this soil mass is what, you can say these are gamma into Z. So these are the what, geodetic stresses. Now understand, the stresses which we need to find out due to this point load P, that we will be dealing with the use of elastic theory here. So and these are also called as induced stresses, because we are trying to find out the effect of this load, this load P on some certain point, say A, or let's say any point which is at a depth of Z there, or at some radial distance of R here. Okay, let's say if some radial distance is considered, that is R distance here. So see, these have been suggested. Now for the theory to be used, for the elastic theory to be used, it is not necessary for soil to be truly elastic, because in SOM you have studied the elastic nature of the different elements and then we apply the elastic theory there. Okay. So in the case of soil, these are not truly elastic, but the ratio of stress to strain, if that is constant, if it is assumed to be constant in case of soil, then we can apply these theories. So even in case of non-elastic soil masses, elastic theory can be used provided we are dealing with relatively small orders of stress, because if the stresses are very large, then these theories will not be applicable, because these are actually in practical these are not elastic. So that is why we are taking use of that theory, but till a very small order of stress. जब तक बहुत ही कम लोड लग रहा होगा तब तक ही हम सिर्फ बात कर पाएंगे, उसके बाद हम इस थ्योरी का मदद नहीं ले सकते. So let us begin here. So stress at any point say P, okay, in the soil mass due to a point, let's say Q, okay, applied at a point say O on the surface can be computed using Bosniak or Westergaard equation. Now let us understand that how this is working. Let us see, if this is a point load Q, say here stress at any point say P, okay. So if you are considering this point as P, जहाँ पे ये लोड लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, पॉइंट लोड से Q, लेट्स से Q अमाउंट का लोड लग रहा है, लेट्स से 50 किलोन्यूटन, 100 किलोन्यूटन, जितना भी लग रहा है, दैट इज Q किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, अप्लाइड एट अ पॉइंट से O, okay, fine. This is point O because the load is being applied here. This load Q is applied at a point O here. Now we need to find out the stress at any point say P. Okay, let us consider this point. यहाँ पे हमें stress निकालना है. Let's say if this is the distance Z here and let's say this is the point of application. यहाँ से इतना रेडियल डिस्टेंस पे है ये. सो इस पॉइंट पे हमें लोड या फिर स्ट्रेस हमें यहाँ पे निकालना है, किसके कारण, इस क्यू लोड के कारण. सो इसके लिए बॉस्नियक और वेस्टरगार्ड ने अपनी अपनी थ्योरीज दी, रिस्पेक्टिव थ्योरीज दी, हम इसका कंपैरिजन भी देखेंगे बाद में. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल सी द विच we do with each and every theory there, we go on for the assumptions first and then we will move on to the calculations and the formulas which are given by the different persons, that is Bosniak here, and then we will go on to Westergaard theory. Now understand what are the assumptions that have been taken. Self weight of the soil is neglected, so we are not considering the self weight, because I have already told you that in the geodetic stresses, what, that if there was this soil, so this was also taken into consideration, the stress due to this part was also taken into consideration. So self weight of the soil in this theory is neglected. Second is soil is initially unstressed, पहले से अभी कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, अब जो लगेगा हम सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट लोड के बारे में यहाँ पे बातें करेंगे. Hooke's law is valid, okay. So stress to strain ratio की बात करी गई यहाँ पे, that it is constant or not constant. Then change in volume of the soil due to the application of the load is neglected. So that is, now understand here, if this is the load
that is applied here, that is let's say Q and applied at a point say O. So इसके कारण जो भी वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ रहा होगा, ओके जो भी इसके कारण वर्टिकल डिफॉर्मेशन आ रहा होगा, दैट विल बी नेग्लेक्टेड हियर. सो वी विल नॉट कंसिडर दैट पोर्शन. वी विल just trying to study the effect of this load on certain point, let's say P here at any distance of radial distance r or at any depth of z. Now last thing is distribution of stresses is symmetrical about the vertical axis. How this stress is symmetrical, we will be seeing this when we analyze the different points there. I will tell you at that point also. Then also understand top surface of the soil is free from the shear stresses and is subjected to only point load. So the very important thing, Bosnisk and Westergaard, though both the computations have been done by them considering only this point load, no other load whatsoever is being considered here. Okay. So this is the very important point that you have to understand, only point load is being considered and the effect of this point load is being considered on different points and different directions, let's say here or let's say here or anywhere just below the point load, just on the ground level also we can consider, or just below the point load, but let's say at a depth of let's say z depth. Okay. So what are the different points there, we can see and analyze the stresses. Now one more thing, soil is homogeneous, isotropic, semi-infinite and elastic. So semi-infinite and elastic you already know. When we talk about homogeneous and isotropic, अच्छा जब हम आइसोट्रॉपिक की बात करते हैं तो आप समझिएगा इस चीज़ को, यहाँ पे आइसोट्रॉपिक यदि हम एक पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ठीक, और अलग अलग डायरेक्शंस में देखते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो सेम रहेगी. बट अगर हम होमोजीनियस की बात कर लेते हैं तो अलग अलग पॉइंट्स को आप देखो और किसी एक डायरेक्शन में देखते हो, ठीक, अलग अलग पॉइंट्स देख लो सॉइल में, लेट्स से अलग अलग पॉइंट्स हैं बट किसी एक डायरेक्शन की अगर आप बात करते हो, लेट्स से इस डायरेक्शन में बात कर रहे हो प्लस एक्स डायरेक्शन लेट्स से, तो इस डायरेक्शन में वो वाली प्रॉपर्टी सभी पॉइंट्स पे सेम रहेगी. तो इसको हम बोल देते हैं होमोजेनियस है, आइसोट्रॉपिक है. देन होमोजेनियस आइसोट्रॉपिक दोनों है, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी है हर पॉइंट पे, ओके, हर एक पॉइंट पे और हर एक डायरेक्शन में सेम है. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड हेयर. एंड देन सेमी इनफाइनाइट का आपको पूरी तरीके से डिस्कस किया था हम लोगों ने जब वी डिस्कस्ड व्हाट, व्हेन वी डिस्कस द कंसोलिडेशन पार्ट. सो द सेमी इनफाइनाइट कंसेप्ट इज देयर एंड देन इलास्टिक soil is being considered. Now let us study this here. This study for this is study for a point load, that is Q load here, which is being applied here, this one here also, which is now we have to study the stresses at this point P. Okay, let's say if this is a plane, this is the let's say top view. Okay, this is the top view, मतलब कि आपको ऊपर से ये दिख रहा है तो ये ग्राउंड किस तरीके से होगा, है ना. तो ये जो टॉप व्यू होगा इसमें क्या होगा, एक एक्स डायरेक्शन हो गया और एक वाई डायरेक्शन हो गया. सो दिस इज द प्लेन वैल्यू. ओके, सो एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन. नाउ अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दैट इफ यू आर गोइंग जस्ट बिलो, okay, when we are going inside the earth, inside the soil, what happens, we are moving in z direction. All right, so this is the z direction, but now we want to find out at this point P. Okay, so these are the three axes which we are considering and we want to find out the stresses at this point P. So understand here the diagram very clearly that let's say load is being applied at this point O and इसकी वजह से हमें कहाँ स्ट्रेस देखना है, इस पॉइंट P पे. तो यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, ये पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है, ये पॉइंट इससे x डिस्टेंस यहाँ पे है, y डिस्टेंस यहाँ पे है, ओके, y डिस्टेंस इस यहाँ पे है और अंडर द ग्राउंड कितना है, ये z डेप्थ है. ओके, सो दीज आर द x, y एंड z थ्री डेप्थ्स. अच्छा, अगर मैं बात करूँ x और y को अगर एक वेरिएबल में रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस ऊपर वाले प्लेन को लूँगा, जो ग्राउंड सरफेस वाला प्लेन है उसको मैं लूँगा और x और y का रिजल्टेंट क्या आएगा, आप खुद ही देखिए यहाँ पे x और ये रहा y, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा होगा, दिस वन r. ओके, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा होगा, दिस वैल्यू r. सो हमने x और y प्लेन को हमने किस में रिड्यूस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ r में. अब इस r को यदि मैं ग्राउंड वाले के साथ रिलेट करना चाहूँ, ओके, दिस z के साथ रिलेट करना चाहूँ, सो इस now we are talking about this what plane, the depth one and the vertical plane here, okay, into the ground. So in this consider here this thing, this is the z, this is the distance r and this one here is the resultant of what, r and
this z. So, this comes out to be capital R. So, in the xy plane we can say small r is equal to what? Root of x square plus y square, the very first thing, because it is simply Pythagoras. Then if you talk about r and z plane, okay, so we are reducing the top plane here, x and y, into one plane, what? R plane here, and the z plane, that is the depth. So, it comes out to be r is equal to root of r square plus z square. This is a right angle triangle there. So, r comes out to be r square plus z square. When we put the values here, so it comes out to be r is equal to root of x square plus y square plus z square. So, we have simply done what? We have simply taken a load and we want to find out the stress at P here. So, we have first we have to find out where this point is located, let us say x, y, z, and we have simply x and y we have converted into small r, and then small r and z we have completed into simplified into capital R, that is the R. Now, let us see what happens next here. Now, we have to find out the vertical stresses at this point P. So, the vertical stress sigma z and the shearing stress, okay, the shear stress will also be acting at this point on this soil element, okay. So, what will be the shear stress which will be acting is also given by Bosquen's there at a point P located at a depth of z that we are already discussing. Let us say if this is this here and इस depth z पे located है ये वाला point, है ना, यहाँ पे. So, अब ये जो है कितना रेडियल डिस्टेंस पे है, एक तो r रेडियल डिस्टेंस पे है और कितना डेप्थ पे है, ये z डेप्थ पे है, ओके. एंड वन थिंग मोर, दिस कैपिटल R इज मेकिंग अ angle of what? Beta angle here. The resultant of R and Z is making a resultant angle beta there. So, that is also taken into consideration. Now, understand one thing more, that where we are considering at a horizontal distance R from the point of application of load. So, this is the load here and at a distance of R, radial distance R, we are considering the load. Now, understand what is sigma z value which is given by Bosquen's here. These are the two equations, this and this, which are given by Bosquen's. These are sigma z is equal to 3q by 2 pi z square into cos to the power 5 beta. Tau rz is given by 3q by 2 pi z square into cos power 4 beta into sin beta. Now, you can easily see that if we consider this triangle, see here, if we are considering this triangle, so you can easily find out what is cos beta. You can easily find out what is cos beta, okay. So, this is r here and what is there? Z here. So, cos beta comes out to be small r by z, that is being can be seen in the diagram. Now, when we put the values of cos beta here and cos beta here and sin beta here in this tau rz, we get the respective values, okay. So, let us put the values here of cos beta and sin beta. So, this comes out to be cos beta comes out to be z by capital R, okay, and then z by root of r square plus z square, which we have already done in the very first analysis which we did, okay. So, this is the same triangle which we have discussed, 0 p and sorry O p, and this is the distance r here, this is the z here, okay. So, sigma z comes out to be what? When we are putting the values in that Westergaard and Bosquen's equations, sorry, in the Bosquen's equations, in that point we are getting sigma z is equal to 3 by 2 pi 1 by 1 plus r by z ka whole square to the power of 5 by 2 into q by z square. So, you can see that here r by z is a manipulating factor here, and also here the q load is giving its effect, also the z square will also put some effect here. Now, sigma z is equal to kb into q by z square. So, simply we have simply written this term as what? Kb, okay. So, we can say that in this equation where kb is equal to 3 by 2 pi 1 by 1 plus r by z square to the power of 5 by 2. So, this was the major equation which was given, and this here kb is Bosquen's factor, Bosquen's influence factor. Now, if you are putting, this is the value for the normal stress there, and if you talk about the shear stress, when you simplify the Bosquen's equation, it comes out to be sigma z into r by z. When you put the values of cos beta and sin beta there, so it comes out to be 3 by 2 pi 1 by 1 plus r by z square to the power of 5 by 2 into q r by z cube. That is very simple. If you know the q z sigma z value, you can easily find out the tau rz value by simply multiplying r by small r by z, that is the depth ratio.
Now understand here what is this, we have already discussed. Kb is known as a Bosniak influence factor, which you have known, which is a number you can already see, but also it is dependent on what, r and z, okay, and is a function of r and z. So vertical stress at a certain depth z is dependent only on the r by z value. So you can see here there is nothing which is talked about material, because is gamma there? No, nothing, no gamma is being mentioned in the equation there. So we can simply say that the load is trying to put some effect, and the Bosniak factor is trying to show the effect here in terms of r and z, कि कितना वेरिएशन हो रहा होगा अगर हम थोड़ी सी दूर जा रहे होंगे लोड से, और कितना वेरिएशन हो रहा होगा जब हम थोड़ा सा डेप्थ में और नीचे चले आएंगे और हम डेप्थ में और नीचे जाके एनालिसिस कर रहे होंगे, ओके। सो यहाँ पे देखिएगा, यदि हम बात कर रहे हैं r बाय z इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे ऐसे लेट्स से इफ द लोड इज बीइंग प्लेस्ड हियर और हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, ओके, इन द रेडियल डायरेक्शन वी आर नॉट मूविंग एट एनी, लाइक इट इज 0, व्हाट हैपेंस इट दिस पॉइंट ओनली, ओके, एट दिस पॉइंट ओनली हम यहाँ बात कर रहे हैं. सो at this value Kb comes out to be 0.4775, and when you move slightly away and r by z value is 0.5, then Kb is equal to 0.2733, okay, and then r by z value is what, when we are changing the r value, increasing the r value, it is coming out to be what, lesser and lesser. So this is the very high value and this is the very low value. So as we move away from the point of application of load, you can easily see that Kb value is decreasing, and as the Kb value decreases, so will the normal stress also decrease, because sigma z is equal to Kb into Q by z square, and this sigma z you can see that it is directly related to what, Kb. As the Kb value reduces, the sigma z value also reduces. Now using Bosniak's equation for vertical stress distribution, following diagrams can be presented graphically after making necessary computations. But we have to analyze that if we go at a certain depth, what happens, if we go at a radial distance, then what happens, okay. So these are the different three things that we will be studying here. Let us see the very first thing, vertical stress isobar diagram, okay. Isobar, when we say, it means what, equal pressure, equal stress. So what is the value, what is the place where the equal stresses will be acting. Then vertical stress distribution on a horizontal plane z units below the ground surface, okay. So if you know, if you are placing the load here and at, let us say, fixed distance, let us say z, we need to find out what is the value of stress that is acting, okay. Let us say if you are here and अगर आप जस्ट पॉइंट लोड के नीचे होंगे तो क्या होगा, तब कुछ अलग वैल्यू आ रही होगी. बट अगर मैं मान लीजिए थोड़ा सा और दूर चला जाता हूँ यहाँ पे, ओके, इस वाले पॉइंट पे, तो क्या होगा, कुछ और वैल्यू आ रही होगी. बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दिस कांस्टेंट डेप्थ z, ओके. मैं इसी डेप्थ पे हूँ मैं यहाँ पे, बट जैसे जैसे मैं दूर जाता चला जाऊँगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से, वैल्यूज़ क्या होंगी और भी कम होती चली जाएंगी, ओके. देन वी विल स्टडी वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन विद डेप्थ एट अ डिस्टेंस r अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ पॉइंट लोड Q. सो जैसे अभी हमने बात करी क्या, Z एक कांस्टेंट डेप्थ पे हम बात कर रहे हैं. बट लेट्स से अगर आप बात करना चाहो कि ठीक है डेप्थ हम कितना भी देख लें, बट अगर मैं कहूँ कि आप जानना चाहो कि लेट्स से r डिस्टेंस पे, एक फिक्स्ड r डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना लोड लग रहा होगा, कितना स्ट्रेस लग रहा होगा, इस Q लोड की वजह से कितना स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा होगा, लेट्स से 1 मीटर की डिस्टेंस पे. अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे 5 मीटर की डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हो और उसी सेम डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हो, उसी सेम रेडियल डिस्टेंस पे देखना चाह रहे हो, तब आप क्या करोगे, यू विल मूविंग ऑन टू समवॉट डाउन वैल्यू. सो आप यहाँ पे z इज इक्वल टू 5 मीटर पे आप चेक कर सकते हो. सो किस तरीके का वेरिएशन आ रहा होगा जब हम वर्टिकली मूव करें, या फिर किस तरीके का वेरिएशन आ रहा होगा जब हम फिक्स्ड डेप्थ पे मूव करें. सो दीज आर 3 थिंग्स विच विल बी एनालाइजिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल स्ट्रेस आइसोबार डायग्राम. सो सी हियर, stress isobar is a curve or a contour joining the points of equal vertical stress in the soil mass. So isobar, as the definition says, it is equal vertical stress which is being acted upon. Now the isobar is really a spatial curved surface of the shape of an onion bulb, which may be referred to as the pressure bulb. Now understand here this pressure bulb, why it is pressure bulb and how does it work here. Let us say if this is the load Q which is acting, now this will be showing its impact here, but the soil is a mass, okay. So अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसी लोड लगता है,
है ना। तो जस्ट इसके 2D में तो हम बात कर नहीं रहे होंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द एंटायर मास जहाँ पे चेंजेस आ रहे होंगे, जहाँ पे इस लोड का इफेक्ट पड़ रहा होगा। सो इस लोड का इफेक्ट हमने कहा कि इस तरीके से पड़ रहा है, इस क्यू लोड का इफेक्ट। बट जैसे ही आप थोड़ा और नीचे चले जाओगे तो क्या होगा, लोड का उस क्यू लोड का इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा होगा, कुछ जो ये वेरिएशन दे रहा होगा ये क्यू अमाउंट का वेरिएशन तो नहीं दे रहा होगा नीचे, एकदम और नीचे चले जाओगे तो, और नीचे चले जाओगे तो, या फिर और भी नीचे चले जाओगे तो उतना वेरिएशन तो नहीं मिल रहा होगा। जितना ज़्यादा आप दूर चले जाओगे उस लोड से उतना ही वेरिएशन उसका, उतना ही इसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो क्यू होगा एंड दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ अ बल्ब बिकॉज इट इज़ अ 3D मास, है ना। 3D मास में जैसा ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे वैसा ही वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे, सभी डायरेक्शंस में सेम होगा। सो इट फॉर्म्स अ शेप ऑफ एन बल्ब, जैसे अनियन बल्ब होता है ऐसे ही इसका भी शेप बन के आता है। ओके सन नीचे जाओगे तो 0.75 क्यू वाला आइसोबार मिल के आता है। एंड सिमिलरली इफ यू मूव अवे, ओके लेट्स से इन दिस डायरेक्शन, देन व्हाट हैपेंस, तब भी यहाँ पे वेरिएशन कुछ ना कुछ कम होता चला जा रहा है। एंड दिस इज ऑब्जर्व्ड हियर दैट व्हेन यू टॉक अबाउट 0.75 क्यू हियर एंड एट this depth 0.6 meters here, what happens, this value observed is 0.512. So this is just one point of reference there. So this is how the pressure gets varied. जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कोई स्ट्रेस लग रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी नहीं लग रहा है। बट अगर आप यहाँ तक बात कर रहे हो, यहाँ पे कह रहे हो कि हाँ 0.25 क्यू का इम्पैक्ट तो आ रहा है, क्यू का इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है बट 0.25 क्यू तक का आ रहा है। ओके बट अगर आप और ही बनाते चले जाओगे तो शायद 0.25 ना 0.10 हो जाए, 0.005 हो जाए, इस तरीके से वेरिएशन आ सकता है, इस तरीके से वेरिएशन देखा जा सकता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ कांस्टेंट डेप्थ z फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, सो वी कैन सी दैट सिग्मा z इज इक्वल टू kb इंटू क्यू बाय z स्क्वायर। सो अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लोड एंड वी आर सेइंग कि इस कांस्टेंट डेप्थ z पे, इस कांस्टेंट डेप्थ z पे क्या क्या वैल्यूज़, क्या क्या वेरिएशन देखा जा रहा होगा। ओके अगर आप यहाँ पे हो और इस डेप्थ z पे बात करते हो और कहते हो कि यहाँ पे मुझे वेरिएशन पता करना है, या फिर आप कहते हो मुझे यहाँ पे वेरिएशन पता करना है। ओके सो यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस हेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पे लोड लग रहा है, जैसे जैसे आप रेडियल डायरेक्शन में दूर जाते जा रहे हो, नाउ यू वांट टू नो दैट यहाँ पे कितना स्ट्रेस लग रहा है। ओके यहाँ पे 2 वाले पे, सो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। नाउ सी इफ यू आर ट्राइंग टू, हाउ कैन वी सी दैट, नाउ सी kb की वैल्यू आप r बाय जेड की अलग अलग वैल्यूज़ रखते चले जाओ, जो कि हमने पहले निकाला था, क्या 0.4775, 0.2773 फॉर r बाय जेड इज इक्वल टू 0.5, फॉर r बाय जेड इज इक्वल टू 1 वी गेट 0.0844 एंड देन फॉर 2 r बाय जेड इज इक्वल टू 2 इट कम्स आउट टू बी 0.0085. सो दिस इज द kb वैल्यू. When you put the kb value in this equation, sigma z value will be obtained. Now q can be anything, z can be anything, okay, but when we vary the r by z value, it will be changing the value of kb, so the stress will also be getting varied. So we can say that it is 0.4775 q by z square. Let's say if this is the maximum value, because जहाँ पे लोड लग रहा होगा, जहाँ पे भी लोड लग रहा होगा उसी पॉइंट पे तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे आप दूर जाते चले जाओगे, लेट्स से यहाँ पे चले गए, है ना, या फिर यहाँ चले गए, या फिर डेप्थ में भी यहाँ पे चले गए, या फिर यहाँ चले गए, तो क्या होगा, स्ट्रेस कम होता चला जाएगा. ओके तो हमने क्या कहा कि अगर हम मान लो z को वैसे ही रखते हैं, ओके z को वैसे ही रखते हैं और रेडियली मूव करते जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम थी जो कि यहाँ जाके 57.7% हो गई, यहाँ पे जाके 17% हो गई, और यहाँ पे जाके 1.8% हो गई. तो देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम है, बट यहाँ पे कितना रिडक्शन आ गया, r बाय जेड की वैल्यू 0 से 0.5 ही हुई है, सिर्फ बहुत ही कम रिडक्शन देखा गया, बट द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज स्ट्रेस विच इज बीइंग एक्सर्टेड, दैट इज रिड्यूस टू more than 50%, है ना, let's say not more than 50%, it is what 43%. So this is a very high, large number of reduction. And beyond this, if we move, okay, beyond r by z is equal to 2, if we move, then what will happen, we have to neglect the vertical stress because that will be becoming too much small there. So this here you can see that we have simply placed the values, r by z value we put here 0.5, so you got what, 0.2773, so this point was obtained here, okay. Then r by z value when you put here,
So if you put up here r by z value, point is 0.273 q by z square, this here 0.084 q by z square, and then we move on 0.0085. So these are the values of decreasing in nature. So in the very first thing here, at this depth z, we are noticing that the value obtained is this much, here the value obtained is this much, and then this, and then this. So the value is kept on decreasing, and then when the value decreases here, then what happens? We can simply state that the variation is what? Variation is like this. The stress is maximum here, okay. So this is this stress is distributed and this is symmetrical about the vertical axis. So जैसा इस तरीके का इधर मिलेगा वैसा ही सेम ग्राफ आपको इधर भी मिल रहा होगा. तो यही इस वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ बात कर रहे थे एक कांस्टेंट डेप्थ z पे. नेक्स्ट क्लास में इसमें हम आगे बात करेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी एक वर्टिकल प्लेन पे अगर हम चेक करना चाहें तो क्या वेरिएशन होगा और डेप्थ हम अगर हम चेंज करते जाए तब क्या वेरिएशन होगा. थैंक यू फॉर दिस क्लास. We'll meet in the next one.